I think it's a wonderful initiative. मैंने अपने वे में भी कुछ साल पहले किया था ये. मुझे भी लगा कि सेक्स हमारे देश में एक स्टिग्मा वाला सब्जेक्ट है. For the longest time, sex in India has been always spoken about and thought of as a dirty thing, as a sleazy subject, and it's always kept in the closet, so to speak. So by endorsing a condom brand, which a mainstream actor had done at the time for the first time, it was my own small way of sort of shedding the light on the changing perception about sex. Youngsters don't look upon it as a taboo subject anymore. Young people don't think of it as a dirty thing anymore, and I took it upon myself to sort of shed light on that. So to try and bring sex out of the closet and make people understand that it's a beautiful thing, that it is an expression. This one in particular because Ashish is my favorite person in the world, and वो डायरेक्ट कर रहे हैं पहली बार. अभी तक वो बाकी सब कुछ कर चुके हैं लाइफ में. मैंने इनफैक्ट उनको फ़ोन करके बोला जब मुझे पता चला वो डायरेक्ट करने वाले हैं कि अब आप एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ने वाले हैं, आप स्पेस में जाने वाले हैं, क्योंकि अब वही बचा है, बाकी सब वो कर चुके हैं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स अ टॉपिक दैट्स वेरी क्लोज टू हिम, क्योंकि ही हैज़ अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद हिज सन, उनके बेटे के साथ. और ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या है इसके अंदर. और ऐसा होता भी है एक्चुअली, बच्चे स्पेशली बॉयज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं बचपन में, तो उन सवालों का जवाब कैसे दिया आनंद है, ये मुझे देखना है. And what's most important is for the Indian youth to understand more and more and as much as they can about safe sex and sex education in our country, and how it's really, really important for the Indian youth to know more. There are still so many institutions that don't have it mandatory, which I think should be made mandatory. Even when I was in school, we would just find our own way and find our own information about it. तब ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं होता था. Now, instead of going and proactively finding their own information, maybe some steps can be taken to educate them in the right way. सर स्क्रीनिंग. Oh, okay. क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? उम्मीद क्या कर रहे हैं अगर ये फिल्म लोग देखेंगे? उम्मीद क्या कर रहे हैं आप लोगों से? Well, I hope it sends out a strong message to parents and to youngsters and to adolescents, anybody who watches, to sort of change their perspective on this subject of sex. Of course, we have a culture, and we live in a society that's traditionally very conservative, but times are changing. With the advent of the internet, things have opened up. Kids today have access to all kinds of information. So I think if somehow or the other this film manages to reiterate the importance of proper sex education for youngsters, I think that will be fantastic. I think the impact will be very good, very positive, because parents should talk to their kids about sex, and sexual education should be in every school. अभी वो इंडिया में नहीं है, it's coming up slowly. It should be there because it's not a taboo. They should know what is the right way and what's the wrong way, and so they'll just be safe. And जब curiosity थोड़ी कम हो जाएगी, तो automatically they'll not do anything wrong in that line. So I think इसका impact काफ़ी अच्छा होगा. To really write it, and that's when two very, very talented people who we've worked with very, very closely in the past, namely Anand Tiwari and Amritpal Bindra. He's the guy who goes topless in Bang Baja Bharat, you can't miss him. Who came on board and brought on board also two incredibly scarily talented writers. Devang Kakkad, who's right here. Devang, take a bow, man. And Gopal Dutt. मतलब इतना मुश्किल है ये लिखना. This is a script that we've struggled with for 6 months. और इतनी आसानी से, इतने प्यार से, with such simple analogies which kids will understand today, not just kids, people of all ages will understand. And it's crazy how little women know about their own menstrual cycles. Today I can tell you,
me and Gopal probably know more about periods than most women. So, first of all, the reason, I mean, I'm playing just a very short and tiny role, and the reason of why I did this because of Ashish. I think he's a very amazing and a fantastic director. Second, because of the importance of sex education in our country, and I feel as a contemporary Indian girl and also as a current Miss Universe India, I have a lot of responsibilities to create social awareness as well, and if I can be an important aspect in such a major digital series, so I don't find any problem in it. So, thank you. Well, unfortunately, this was also part of my family, like how we always used to be very shy about talking about it and all. But if you ask me, it was during my teen years, yeah. Yes. So late, I mean, like... yeah, exactly. Which creates a social awareness. I'm really glad to be part of it. Well, it's a very short, and I just did it because of the friendship, and also because of the fact that sex education is very important in our country. So yeah. How was working with the cast, the whole cast? I haven't worked with anyone except the director, Ashish Patil. So yeah, I'm really happy about that. तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, मैंने कहा कि ओ हाथ को आया, मुंह को नहीं लग रहा है, वैसा था. मैंने कहा कि यार जब आशीष जी से मुलाकात वापस हुई और उन्होंने मुझे समझाया, तो मैंने बोला कि ये कुछ है जो हमें पूरे इंडिया के लोगों को जानना चाहिए इस बात को. बिकॉज ये आप अगर यूएस में जाकर देखोगे या फिर बाहर कंट्री में जाके देखोगे, ये सारी चीज़ें बचपन से बताई जाती है. मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर रहती है, यूएस साइड में रहती है और आउट ऑफ कंट्री, तो उनको जब मैंने ये लिंक भेजा तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है इसमें. मैंने कहा कि ये रिलेटेड ऐसा है, ये इंडिया में थोड़ा सा इसे गलत माना जाता है, जिसका हशर बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है. तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था कि ये क्या है, लाइक ये तो नॉर्मल चीज़ है, उनके वहाँ पर नॉर्मल है. बट ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली है, तो आई होप कि आप सब देखें. हमने तो स्क्रीनिंग में मज़ा ले लिया और मज़ा भी आया. आप अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा, दादा दादी सभी के साथ मिलकर ये सीरीज़ देख सकते हो, और इसमें मज़ा भी आएगा देखने और चीज़ें समझ में भी आ जाएगी. बिकॉज आप फिर वो गूगल नहीं करने बैठोगे. जिस बच्चे को भी क्वेश्चन होगा तो वो गूगल पर नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना फास्ट हो गया कि कुछ भी बटन दबाओ, सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो सारी चीज़ों से बचकर रहोगे. वेब सीरीज़ बहुत कमाल का बना है पप्पू और पापा, और हम लोग को जब ये कॉन्सेप्ट बताया गया था तो हम लोग भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि किस तरह से ऐसे मुद्दे पर बातें, मतलब मैस्टरबेशन या कॉन्डोम या प्रेगनेंसी. लेकिन जब मैंने फिल्म को देखा, क्योंकि हम लोग ने इस फिल्म का बैकग्राउंड किया है, इस फिल्म के जो 2 गाने हैं, इसमें से एक गाना तो है जो मेरे बेटे ने गाया है, जो एक लास्ट का एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है, लव यू पापा, दैट इज संग बाय शुभ माय यंगर सन, और म्यूज़िक हमने दिया है एज सुपरबिया. तो बैकग्राउंड के वक्त हम लोग देख रहे थे, और वाकई जब इसको देखा और पता चला कि बहुत ही प्यारे तरीके से, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है. मतलब एक उसमें मजाक भी है, उसमें मस्ती भी है, और उसमें एक सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन भी है. जो बच्चे कई बार मुकर जाते हैं या फिर बड़े हम लोग डर जाते हैं कि यार ये क्या सवाल पूछ दिया, मैं कैसे इसका जवाब दूँ. हम लोग कुछ भी उनको नाप शनाप कह देते हैं, जिससे एक सीरियस इम्पैक्ट होता है उन पर. उनको वाकई लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ है, और फिर जब उनके दोस्त या उनके हम उम्र के बच्चे उनको समझाते हैं, तो वो तो कुछ अजीब गलत चीज़ें बता देते हैं उनको. तो इट्स बेस्ट कि एज पेरेंट्स हम उन्हें बताएं, लेकिन कैसे बताएं, तो अभी एक आसान तरीका हो गया है. उन्हें ये शो दिखा दें, ये फिल्म दिखा दें, और सब कुछ वो खुद ब खुद समझ जाएंगे. Well, I think I would like to say that the star cast is fantastic. I've never worked with them before. The production house actually, यशराज के साथ काम करना था, and जब मौका मिला तो I thought this is the right time for me to start working with them. And the director, my first meeting was with the director, so he was the big reason. What will be the impact on the masses? I think जो भी मुझे ट्रेलर से रिस्पांस मिला है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, और सब बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ पहले देखी नहीं है उन्होंने. Like the trailer is really refreshing and it's very nice. So I'm really looking forward for it. और मेरे लिए तो ये बहुत ही नई चीज़ है. I had no idea that ये concept web series क्या होता है. So I am superbly excited about this.